जनक को हम झटक देंगे और मैदान में पटक देंगे। Political rallies, campaigns and a lot of promises. Well, this is how महाराष्ट्र में अभी माहौल चल रहा है। पॉलिटिकल ग्रुप्स जो बन गए हैं, दैट इज महायुति एंड महाविकास आघाड़ी, उनके बीच की ही जंग नहीं है, बट देयर इज आल्सो अ कंपटीशन विद इन दीज अलायंसेस। किस पार्टी को एक अलायंस के अंदर कितनी सीट्स मिली हैं? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। 5 बार लगातार इन्होंने मुझे चुनकर दिया है। जो कहते ना कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही बात भाजपा की है। बांटते हैं और किस्सा काटते हैं हर एक का और फिर लूटते हैं। But keeping the politics of politics aside, here is everything you need to know as a voter about the upcoming Maharashtra Assembly elections. Maharashtra Assembly में है total of 288 seats, which stands as one of the top 5 biggest assembly constituencies in India. इन 288 सीट्स में वोट करने के लिए एलिजिबल है मोर देन 9.63 करोड़ वोटर्स। इस जंग में पार्ट ले रहे हैं 4140 कैंडिडेट्स। महाराष्ट्र में सम ऑफ द डोमिनेंट पार्टीज आर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, शिवसेना factions, the Nationalist Congress Party which is NCP and the Indian National Congress. The voting for all these seats will happen on November 20th. This means this is a single phase election. On this day, the eligible voters can vote anytime between 7 a.m. to 6 p.m. The counting of the votes will happen on November 23rd and the results will be declared the same day. Let's talk about the key issues that are expected to shape up the voters' decision in Maharashtra. महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट ऑफ वोटर्स है गांव के वोटर्स का, जो कि डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। उनके लिए फार्मर लोन्स एंड ड्रॉट्स मेजर कंसर्न है। और अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, सिटीज लाइक मुंबई एंड पुणे फेस चैलेंजेस अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, पोल्यूशन एंड ट्रैफिक. In fact, vehicular traffic has become such a huge menace in these cities that politicians are promising innovative measures for traffic management. I would definitely like to have active traffic management personnel, traffic police on road across Mumbai. You have to have good public transportation that moves people who drive cars towards public transportation. That's the real solution. Another big issue is employment. Maharashtra, being an industrial and financial hub, has seen demands for job creation, skill development, and policies that support small businesses. Every religion, every caste, every creed, every person from all across the country, whoever comes with a dream, a hope for himself or herself, wanting a job, wanting to start off a business, comes and settles largely in that area, especially Worli. आपका एक वोट विल बी डिसाइडिंग हर एक छोटा इम्पैक्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का उसके स्टेट के लोगों पर होता है. In fact, the impact of Maharashtra elections goes beyond this state. With its economic power and influence, the decisions made here set trends that resonate across India. Don't forget to check your name on the voter list and bring your voter ID card. Voting is the best way to make your voice heard, and this election will shape Maharashtra's future for the next 5 years. What do you think is the biggest issue in your constituency? Do let us know in the comment section below. For more such interesting videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.